Hello everyone. Now we are going to revise the nutrition in human beings. Now human beings have the special digestive system. They have the special structure which is known as the human alimentary canal. Human alimentary canal के through human beings में digestion का process होता है, nutrition का process, nutrition और ingestion से start होता है. We have studied the different steps of nutrition, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. So there are the special organs which we known as the organs of human digestive system. These include mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. Now human alimentary canal. Human alimentary canal comprises of the organs of the human digestive system plus the rectum and the anus from which the food is ejected out from our body. Now let's consider how the food is taken in from the mouth and how the waste material, or we can say the excretory products, are excreted out from the body by the anus. So let's start from the mouth. Now mouth, there is a saliva present in our mouth. That saliva is secreted by the salivary glands. Salivary glands secrete saliva, and that saliva contains the special enzyme called salivary amylase that converts the starch into sugar. So we can say that digestion very first starts from our mouth only. माउथ से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जहां पर आपका स्टार्च का डाइजेशन होता है शुगर में. माउथ ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ टीथ. ह्यूमन बींग्स में देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, एंड ऑल हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. Teeth helps in chewing and grinding of food, because when the food from the mouth goes to the other part, to the esophagus, it must be grind. Now the tongue is also present inside our mouth. What is the role of tongue? It helps in rolling of food, because if tongue is not present, then food will not able to roll. Rolling of food and tasting of food. How do we get to know what is the taste of the food? How do we know that this particular food is sweet? How do we know this is sour, this is salty? किससे पता चलता है? टेस्ट हम करते हैं, और टेस्ट कौन डिटेक्ट करता है? टंग. सो दिस इज ऑल अबाउट माउथ. माउथ में डाइजेशन किसका हुआ? सबसे पहले माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ. किसका डाइजेशन हुआ? स्टार्च का शुगर में. एंजाइम दैट इज प्रेजेंट, इट इज सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है, और सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? फ्रॉम दी सलाइवरी ग्लैंड्स. नाउ व्हाट हैपन्स? The remaining food, that is the remaining undigested food from the mouth comes to the stomach through esophagus. Esophagus is a food pipe. एक पतला सा पाइप होता है माउथ से, esophagus के थ्रू फूड जाता है by peristalsis. Now what is this peristalsis? Peristalsis is a process in which the food goes from the mouth to the stomach by peristaltic movement. Peristaltic movement में क्या होता है? आपकी स्फिंक्टर मसल्स होती हैं ईसोफेगस में, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं. सो वी कैन से द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ईसोफेगस to push the food downward from the mouth to the stomach is known as peristalsis. अब आप ऐसे देखिए, एक पतला सा पाइप है, उसमें मुझे एक इतनी छोटी सी चॉक ऊपर वाले पार्ट से नीचे होल से निकालनी है. नाउ व्हाट आई विल डू? आई विल पुट द चॉक फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द पाइप, देन आई विल पुश इट, आई विल कॉन्ट्रैक्ट दैट पाइप एंड देन रिलैक्स. तो चॉक थोड़ी नीचे जाएगी, फिर मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगी और रिलैक्स करूंगी, फिर चॉक थोड़ी ऐसे ऐसे करके पुशिंग करके चॉक नीचे की तरफ आ जाएगी. This happens in the esophagus also, and this process is known as peristalsis, the contraction and relaxation of muscles. Now food has come to the stomach. Food हमारा stomach में आ गया. There are gastric juices present in the stomach. Stomach में gastric juices present है, and these juices comprises of the पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस. 3 चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूसेस में, स्टमक में जो प्रेजेंट है.
pepsin, HCl and mucus, and all these three have different functions. What is the function of pepsin? It helps in breakdown of proteins. तो यहाँ पे हमारा स्टमक में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन हुआ, माउथ में स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ था. पेप्सिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स. HCl का क्या फंक्शन है? इट मेक्स द मीडियम एसिडिक. स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. वाई? बिकॉज दिस एंजाइम पेप्सिन वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम ओनली. अगर HCl मीडियम एसिडिक नहीं बनाएगा तो पेप्सिन एंजाइम वर्क नहीं करेगा. सो दिस एसिडिक मीडियम इन विच द पेप्सिन वर्क्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय द HCl. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस? म्यूकस क्या होता है? स्टिकी सब्सटेंस. रोल ऑफ म्यूकस क्या है? क्योंकि HCl प्रेजेंट है स्टमक में, इट इज अ एसिड, सो इट कैन डैमेज अवर स्टमक. So the role of mucus is to protect the inner lining of stomach from the harmful effect of hydrochloric acid. Now from stomach the food goes to the undigested foods go to the next part, that is the small intestine. Here small intestine receives the secretion of two glands, liver and pancreas. Liver secretes bile and pancreas secrete pancreatic juice. दो सिक्रीशंस रिसीव होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर की और पेनक्रियास की. नाउ दीज हैव दी स्पेशल फंक्शंस. बाइल और पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन लेटर ऑन. नाउ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे. नाउ व्हाट हैपन्स, दीज इंटेस्टाइनल एंजाइम्स फर्दर ब्रेक डाउन दी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. Carbohydrates is converted into glucose. Carbohydrate is a complex form and it is broken down into glucose. Fats is broken down into fatty acids and glycerol, and proteins is broken down into amino acids. So we can say that small intestine is the site of complete digestion. सब चीज का यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स का यहाँ डाइजेशन हो गया. स्मॉल आपका स्टमक में प्रोटीन्स का यहाँ भी डाइजेशन होता है, और जो प्रोटीन्स फर्दर बच जाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं, और माउथ में आपका स्टार्च का डाइजेशन हो गया. तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर गेट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. Now what is the role of pancreatic juice which is secreted by pancreas? अब यहाँ ये जो secretions होते हैं लीवर और पेनक्रियास के, इनका कुछ ना कुछ रोल होगा. तो pancreatic juice contains two enzymes, trypsin and lipase. What is the role of trypsin? Trypsin helps in ये जो प्रोटीन का breakdown होता है यहाँ पे, it is done by the trypsin enzyme. Trypsin breaks down the proteins into peptones and lipase helps in emulsification of fats. Emulsification of fats का क्या मतलब होता है? Conversion of larger fat droplets into the smaller fat droplets. Large fats को smaller fats में convert करना, this is the emulsification. So fats is broken down into fatty acids and glycerol. Now function of bile. Bile का क्या function है? Bile makes the acidic medium alkaline. अब यहाँ स्टमक में पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए था काम करने के लिए, तो HCl ने मीडियम एसिडिक बनाया. यहाँ पर दिस ट्रिप्सिन एंजाइम वर्क्स इन एल्कलाइन मीडियम. तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम को एल्कलाइन प्रोवाइड कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज डन बाय द बाइल. तो डिफरेंस समझ में आया आपको? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन both breaks the proteins into amino acids, but the difference being pepsin is present in stomach and it works in acidic medium, while trypsin is present in small intestine and it works in the alkaline medium which is provided by the bile. Bile, there is one more function of bile, it is the emulsification of fats, means further fats का breakdown होता है fatty acids और glycerol में. Now from small intestine digestion यहाँ complete हो गया, तो जो undigested food है, now it comes to the large intestine. What happens in large intestine? From that undigested food the excess of water is absorbed. Water जो है वो absorb होता है large intestine में, so the waste material that is left is in now solid form. क्योंकि water उसमें से remove हो गया,
लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो वेस्ट मटेरियल है हमारा वो सॉलिड फॉर्म में बच गया. नाउ रेक्टम, दैट अनडाइजेस्टेड फूड या अनवांटेड मटेरियल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, comes to the rectum where it is temporarily stored. Rectum is the temporary collection of waste. Rectum में temporary collection होता है waste का when until when it is excreted out by the anus. Rectum में तब तक waste store रहता है जब तक कि वो anus से excrete out नहीं होता. तो anus is the organ which helps in the process of egestion, we can say. Egestion, जो हमारा waste product है वो eject नहीं हो जाता जब तक anus से. So this is all about the nutrition in human beings, the different steps, how the food is digested in the organs of the human digestive system. Thank you.